Good morning, students. Today we discuss about categories of plants on the basis of habitat and nutrition. Classification of plants on the basis of habitat. The place where plants or animals live, get food and interact with the environment is called their habitat. Plants and animals live and adapt themselves to their habitat. The habitat may be terrestrial or aquatic. Terrestrial or land habitats can be deserts, mountains or grasslands. Aquatic habitats can be ponds, rivers, lakes or oceans. On the basis of the natural habitat, plants have been classified into three categories: mesophytes, xerophytes and hadrophytes. ये three categories हैं on the basis of natural habitats. 90, these are mesophytes. Cactus, these are xerophytes. Water lily, these plants are hadrophytes. Mesophytes, these plants grow on land and need moderate amount of water supply for their survival. They have medium sized roots and bear normal green leaves. Some examples of mesophytes are, ऐसे ये plants इनको moderate amount में water चाहिए होता है. For example, mango tree, apple tree, etc. Xerophytes, these plants grow in deserts. They need very small amount of water for their survival. They have long roots which go deep into ground. They bear thin and spiny leaves which help to minimize their water loss. Some examples of xerophytes are cactus, bubble, etc. ये ऐसे plants हैं जिनको कम amount में water चाहिए और ये deserts में ही होते हैं. Hadrophytes, these plants need maximum amount of water, hence they grow in water. They have either very small roots or no roots at all. They bear leaves coated with a thin film. This film helps to protect them in water. Some examples of hadrophytes are lotus, water lily, etc. इनकी लीव्स के ऊपर एक थिन फिल्म होती है, वैक्स की तरह. मीन्स जो ये थिन लेयर होती है ये वाटर रेजिस्टेंस होती है, वाटर को स्टेबल नहीं होने देती है अपने ऊपर. नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, these plants prepare their own food by the process of photosynthesis. All green plants belong to this category. जितनी भी green plants हैं उस categories में आते हैं जो अपना food अपने आप prepare करते हैं. Heterotrophs, these plants cannot prepare their own food. They use the food synthesized by other plants or animals. ये ऐसे plants हैं जो another plants की food को use करते हैं, उनको खाते हैं. Heterotrophs are again divided into two categories, that is saprophytes and parasite. Saprophytes are plants which feed on dead and decaying bodies. Mushroom and fungus are example of saprophyte plants. Parasite are plants that feed on other living bodies, जो living bodies के ऊपर depend रहते हैं. Dodder means amabale and orchid are example of parasite plants. This is the amabale जो किसी एक प्लांट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है और उस प्लांट को अपना फूड बना रही है, वहाँ से ही फीड कर रही है, वहाँ से एनर्जी गेन कर रही है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स में डिवाइडेड है ये, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल मैंगो ट्री, एप्पल ट्री. नाउ हेटेरोट्रॉप्स आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट: सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट. सैप्रोफाइट का सिंपल सा एग्जांपल है मशरूम एंड पैरासाइट इज डोडो, that is amabale. Okay, thank you, friends, and have a nice day.